Now the budget speech by the Honorable Chief Minister Sahab. Bismillahirrahmanirrahim. बिस्मिल्लाह का जवाब इससे आया है। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। मैडम स्पीकर, सबको हिदायत दे, हम तो हमेशा कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मैडम स्पीकर अपने रब के सामने इंतहाई ह्यूमिलिटी से आज खड़ा हूँ। मुझे ये एजाज़ हासिल हुआ है कि मैं 2022-23 की बजट इस ऐवान में पेश करूं। मुझे ये सिंगुलर एजाज़ है कि मैं आज 10वीं बार इस सूबे की बजट पेश कर रहा हूं। मैं इस एजाज़ के लिए अपने रब का शुक्रगुजार हूं। मैं अपनी पार्टी लीडरशिप, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सदर आसिफ अली जरदारी साहब का शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने पार्टी के सीनियर्स, ख़ास तौर पे मेरे चीफ मिनिस्टर कायम अली शाह साहब यहाँ बैठे हैं, उनका शुक्रगुजार हूँ। ट्रेजरी में और अपोजिशन में बैठे हुए सब दोस्तों का, सब मेंबर्स का, चाहे वो इस असेंबली में हो, 2008 से 2013 वाली असेंबली में थे, 2013 से 2018 वाली असेंबली में थे, और ये 2018 से आज जो असेंबली है, इन सब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये शर्फ मुझे बख्शा है लीडर ऑफ द हाउस चुन के और फाइनेंस मिनिस्टर होते हुए कि मैं ये बजट पेश कर रहा हूँ। मैडम स्पीकर, I with greatest humility present the budget for 2022-23 of the Government of Sindh, amounting to rupees 1,713,583,744,000 यानी 1,714 अरब रुपए का तकरीबन तखमीना है, with no new taxes। और in fact हमने टैक्सेस में जो रिडक्शन की, मैं अभी बताऊंगा उनके बारे में, मैं ये बजट आज पेश कर रहा हूँ। जैसे मैंने कहा, दिस ओकेजन फिल्स मी विद प्राइड, yet challenges to us to face the stark reality of economic uncertainty staring at us. This is the fourth budget of the current term of the Pakistan People's Party government in Sindh, which is reflected of ensuing economic struggle in wake of a political situation at national level in the last few years. Madam Speaker, this past year witnessed extraordinary changes both nationally and internationally with direct bearing on the common man. Despite that, Government of Sindh vows to leave no stone unturned to ensure economic and political stability in the province, contributing its shares in the common national effort which is in line with the values of the vision and leadership of Pakistan People's Party. Madam Speaker, I pray to Almighty Allah that our land, our beloved country, and democracy be protected from dangers and challenges that it is facing. May democratic forces always rise and shine in this country. May Almighty Allah bestow us with courage and capability to serve the people of our motherland, Sindh, on the vision and principles set forth by our founding father, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, Quaid-e-Awam Shaheed Zulfikar Ali Bhutto, and Quaid-e-Jamhuriyat Mohtarma Shaheed Benazir Bhutto. Madam Speaker, I must thank the Prime Minister of Pakistan, Mir Mohammad Sharif, his team, the members of the coalition government, the federal government, Maulana Fazlur Rahman, Khalid Maqbool Siddiqui Sahab, Akhtar Mengal Sahab, या Order in the house, please. सब मैं ये सुन रहा हूँ इनकी बातें, एक्चुअली मैं
सिर्फ एडजस्ट कर रहा हूँ कि आगे ये बजट सेशन कैसे चलेगा वो पता चल जाएगा मुझसे। मैंने शहबाज शरीफ कहा था। अच्छा जी, I will say that this arrival we see a glimmer of hope after 3.5 years in which Sindh was subjected to neglect and disregard by the federal government for reasons best known to the rulers in Islamabad. We were not only subjected to unfair treatment when it came to privileges, but also received financial reprimand whenever it came to benefits to the people of Sindh. I will shed more light on how federal government deprived the people of Sindh from development on one side and also managed to restrain our efforts to provide them the needed services by holding back a rightful share and receipt of the 7th NFC award. Despite the heartburning, we continue to stand by our commitment to our people for giving them as much relief as possible. Hence, we are taking several steps to pass on the benefits to the common man. We feel it high time that we all join hands, setting aside all differences and work for the progress and prosperity of the country. In this backdrop, I would like to quote the encouraging words of the father of the nation, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, reposing trust in the people of this great nation. And I quote, "I have no doubt in my mind about the bright future that awaits Pakistan when its vast resources of men and material are fully mobilized. The road that we have to travel may be somewhat uphill, but with courage and determination, we mean to achieve our objective, which is to build up and construct a strong and prosperous Pakistan." Pakistan People's Party has always been a party of the people, for the people, by the people. We have contributed more sacrifices to the cause of democracy than any other political party. We vow to uphold democratic norms in its true spirit. The policy of our leaders always centered on the idea of welfare and well-being of the common man. They strove relentlessly to achieve these goals. Now, under the dynamic leadership of Pakistan People's Party Chairman Bilawal Bhutto Zardari and President Asif Ali Zardari, the Pakistan People's Party and its government continues to work tirelessly for the uplift of the people. The effort to prepare the budget 2022-23 is in line with the collective vision of our leaders, and I feel honored to present budget for the financial year 2022-23. Madam Speaker, मैं अगले बजट के नंबर्स देने से पहले थोड़ा सा आपको बताऊंगा हमारी जो रिलीफ हम दे रहे हैं अगले साल के बजट में, ताकि वह सामने आ जाए, और उसके बाद आगे थोड़े पिछले 3.5 साल, पौने 4 साल की कहानी भी बताऊंगा। मुझे उम्मीद है कि तहम्मुल से सुनेंगे और पता चलेगा कि क्या किया है इन्होंने पिछले 3.5-4 साल में। मैं सब बताऊंगा। मैं सबसे पहले जो अगले साल मैं मैडम स्पीकर जो पढ़ रहा हूँ वो मैं अपने बताऊंगा। Madam Speaker, we are sensitive to hardship being faced by the common man, especially farmers, due to recent water crisis and increase in price of essential commodities. In order to provide relief at the grassroots level, we have designed special programs in this budget to support a hard-hit social and agricultural sector. As part of post-COVID-19 recovery process, Government of Sindh has developed a two-pronged development strategy focusing on one hand on low-income group under social sector program, on the other hand on infrastructure development in the entire province. For the next financial year, we are targeting specific sectors including but not limited to health, law and order, infrastructure development and revamping and rehabilitation of the irrigation and drainage system of Sindh, with an objective to cope with the fast changing climatic condition in the agricultural sector. The foremost priority, however, is to provide relief to the public. Major relief measures taken up by the government for the next financial year are as follows. Madam Speaker, for the second consecutive year, we are not proposing any new taxes. As I said, not only are we not providing any new taxes, we are reducing taxes and we are doing away with some taxes. और उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि अगले वाली साल में
हमारी प्रपोजल है कि कॉटन फीस, प्रोफेशनल टैक्स और एंटरटेनमेंट ड्यूटी अगले साल के लिए खत्म की जाए, ये टैक्सेस खत्म कर दिए जाएंगे। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस जो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं उनके लिए हम अगले साल के लिए खत्म कर रहे हैं। हम एक प्रो पुअर रिलीफ पैकेज जिसकी टोटल कॉस्ट 26.85 बिलियन वो इस बजट पर रख रहे हैं और उसकी डिटेल्स में आगे आपको जाके दूंगा। To address issue of food insecurity and access of common man to food, Government of Sindh has earmarked 23.324 billion for wheat subsidy in the next financial year 2022-23. In order to provide relief to farmers, Sindh is offering the highest support price in comparison to the rest of the provinces, and the support price this year was 2,200 per 40 kilograms of wheat. Besides this, subsidy on seed, fertilizer, pesticide has been provided to the tune of rupees 2.552 billion in current financial year, and a provision of rupees 3 billion has been kept for the next financial year 2022-23. मैडम स्पीकर, मैं जैसे कि मैंने कहा बजट आने से पहले मैं रिलीफ की बात कर रहा हूं। हमने एडहॉक रिलीफ अलाउंस 2016 में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के पे और पेंशन की बात कर रहा हूं। 2016, 2017, 2018, 2019 और 2021 में एडमिसिबल टू एम्प्लॉइज ऑफ फेडरल गवर्नमेंट जो भी हमने दिए थे वो हम मर्ज कर रहे हैं। बेसिक पे स्केल 2022 में हम सिविल सर्वेंट्स गवर्नमेंट ऑफ सिंध के लिए एडहॉक रिलीफ अलाउंस एट द रेट ऑफ 15% ऑफ बेसिक पे स्केल टू गवर्नमेंट ऑफ सिंध एम्प्लॉइज इज बीइंग प्रपोज्ड। मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं। आप क्यों खड़े हो गए? आप बैठ जाएं। आप तशरीफ रखिए, अभी डिस्टर्ब नहीं करें, अभी ये इशू नहीं उठाएं, डिस्टर्ब नहीं करें आप कंटिन्यू टू स्पीक बिकॉज मुझे पता था इन्होंने ये करना है, कोई ना कोई बहाना बना के ये करना है। इनकी तो पूरे लोग ही छोड़ के चले गए, इनको क्या पता है। अभी कुछ दिनों में ये बचे कुछ समेत इनके वो भी इधर ही आके बैठेंगे हमारे साथ, देख लीजिएगा जो इनकी साजिशें चल रही हैं। मैडम, मैं बताना चाहता हूं कि इस वक्त हमारी जो पेज है सूबा सिंध की वो बाकी सारी सूबों से ज्यादा है। इस साल हमने 15% सैलरीज बढ़ाने के लिए कहा है, लेकिन बाकी सूबों की बजट आना अभी बाकी है। हम इंतजार करेंगे, अगर किसी सूबे में सिंध के सूबे के मुलाजिमीन से बजट ज्यादा होगी तो हम उसको सिंध के बराबर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके साथ साथ पेंशन में हम 5% बढ़ा रहे हैं, और मैं पेंशन की भी बात कर रहा हूं कि इस वक्त हर ग्रेड में ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 22 तक सिंध सूबे के मुलाजमीन की पेंशन बाकी चारों सूबों और वफाक की पेंशन से ज्यादा है। लेकिन मैं फिर रिपीट करता हूं कि अगर कहीं पेंशन बढ़ेंगी और हमसे ज्यादा हो जाएंगी तो हम अपने सूबे के मुलाजमीन को कम से कम उनके बराबर करेंगे। इसके अलावा एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी और मैं आज उसका ऐलान करना चाहता हूं कि जो ग्रेड 5 में थे कांस्टेबल, उनको मैं ऐलान करता हूं कि उनको 1 जुलाई से उनका ग्रेड बढ़ा के ग्रेड 7 में कर दिया जाएगा। मैडम स्पीकर, मैं जो सेल्स टैक्स रिलीफ मेजर्स है उनके बारे में कुछ बताना चाहता हूं। हम सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज में 5% reduction in rate of recurring agents will continue for the next 2 years, that is up to 13th of June 2024. This relief was proposed for Pakistanis aspiring to work overseas.
Services provided by cable TV operators are levied at a reduced rate of 10%. The existing relief is proposed to be extended for a further period of 2 years ending 30th of June 2024. Cable TV operators in rural areas under PEMRA license of R category will be exempted from sales tax on service till 30th of June 2023. The rate of sales tax on service on commission charges received by food delivery channels are proposed to be reduced from 13% to 8% for a period of 2 years ending 30th of June 2024. This relief is proposed in order to encourage small-scale businesses. In all other cases, the services provided as rendered by commission agents shall continue to be liable for sales tax on service at 13%. The existing exemptions on health ये मोबाइल अलाउ नहीं है शहजाद कुरैशी साहब, ये मोबाइल अलाउ नहीं है of 1 year till 30th शहजाद of कुरैशी साहब 2023. शहजाद कुरैशी साहब, आप मोबाइल अलाउ नहीं, आप मोबाइल नहीं यूज करें. मैडम स्पीकर, जो करंट फाइनेंशियल ईयर में हमारी मेजर अचीवमेंट्स हैं, मैं वो कुछ हाईलाइट करना चाहूंगा. मैडम स्पीकर, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री, appointment orders have been issued to 47,000 teachers in single phase who through merit-based recruitment process. The step is aimed at revitalizing the education sector by filling in all vacant posts across Sindh. Government of Sindh has launched Rescue 1122 service in the province. The service is aimed at providing immediate medical aid to people for shifting them to hospitals in emergencies. The service has been initiated in Karachi in the first phase and it will be rolled out to the entire province in the second phase. Initially, 50 ambulances have been provided, which will increase to 230 in this year. The service will be turned into a complete package of rescue, relief and rehabilitation, connecting fire brigades and trauma centers all over the province. In Karachi, the Green Line bus funded by the federal government has been operationalized with effect from 25th of December 2021. Besides this, construction work on the Orange Line is near completion in current financial year. Government of Sindh has recently launched People's Bus Service. 250 buses will operate on 7 different routes in Karachi. For the procurement of 250 buses, DOS has spent 6.4 billion in 2021-22 and has allocated rupees 4 billion in next year's budget. In order to improve road infrastructure, Works and Services Department has completed 211 schemes during the financial year 2021-22, under which 1,695 kilometers of farm to market road have been constructed and 1,200 kilometers of intercity and intracity and town road networks has been reconstructed or rehabilitated. The Irrigation Department has so far completed lining of 318 miles of canals and plans to complete approximately 500 miles in financial year 2022-23 to save thousands of cubics of water. The Irrigation Department has also constructed 92 small dams, recharge dams and delay action dams in Nagar Parkar and Kohistan area. These structures will store rainwater from the hill torrents of Karunjar and Kirthar Hills and cultivate about 255,000 acres of land and provide water for human and animal consumption. Agriculture Department has improved 1,110 water courses. Energy Department has electrified 225 primary health facilities in 13 districts and 11 government schools in Larkana through solar power. A 610 megawatt wind power project and 50 power solar power project under IPP mode is under construction. Besides, 660 megawatt electricity is being generated from Thar coal. Sindh Solar Energy Project has also initiated programs for establishment of 20 megawatt
solar power facility on the rooftop and other available spaces in public sector buildings in Sindh. Despite financial constraint, Government of Sindh has assigned high priority to urban development, especially Karachi city. Development projects in Sindh, 6 major sectors including water supply, sewerage treatment, stormwater drains, solid waste management, internal roads and mass transit are underway in Karachi. Out of the total 31 foreign funded projects in ADP 2021-22, 7 projects costing rupees 189 billion are specifically for Karachi. Total allocation of foreign funded projects during current financial year 2021 was 71.164 billion, out of which 35.29 billion were earmarked for Karachi project only. Total allocation for Karachi based scheme for next financial year is 118 billion rupees, which includes rupees 72 billion under provincial ADP, 5 billion under district ADP, and rupees 41 billion have been allocated under foreign funded project. Government of Sindh is going to launch the Sindh Human Capital Project, Sindh 1000 Days Plus program in the next financial year. This project will be finalized jointly by GOS and World Bank with financial assistance to the tune of $400 million. The program aims to make significant positive change in reproductive, maternal, newborn and child health related indicators in Sindh. Injustice to Sindh in federal PSDP and CPEC projects. मैडम स्पीकर, अगर मुझे इजाजत दें तो मैं पिछले 3.5 साल में जो हमारे साथ नाइंसाफियां हुई हैं वो थोड़ा सा बताऊंगा. अगर किसी में थोड़ी सी शर्म होगी वो डूब के मर जाएगा, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं. पिछले 3 साल में फेडरल पीएसडीपी में रोड्स की स्कीम्स जो थी पूरे पाकिस्तान में 1.3 ट्रिलियन यानी 13,000 अरब रुपए की रोड स्कीम रखी गई और सिंध का हिस्सा इन 3 साल में क्या था? 1.5 अरब रुपए, 13,000 में से. और सोने पे सुहागा, ये 1.5 अरब भी खर्च नहीं हुआ. वो स्कीम आज तक अप्रूव ही नहीं हुई. वो एक नेशनल हाईवे पे बनाना था इंटरचेंज, वो आज तक नहीं बना. इस साल बजट में दोबारा रखा गया है. इसी तरीके से वाटर सेक्टर में 158 अरब रुपए की स्कीम्स रखी गई पिछले 3 सालों में. ये पीएसडीपी में है और ये मैंने डॉक्यूमेंट किए खतों के साथ, और इन्होंने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा. हमेशा मीटिंग से भाग जाया करते थे ये जब भी मैं बात करता था. 158 अरब रुपए में सिंध सूबे का शेयर था 1.2 अरब रुपए. ये हालत थी पिछले 3.5 साल में. और इनकी अपनी अय्याशियां वो चलती चली जा रही थी. और कहते क्या थे, अभी इन्हें बताया गया कि ये पिछले 3.5 साल में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की फेडरल गवर्नमेंट ने 80% कर्जे लिए. जब से कर्जे लेने शुरू किए, ज्यादा किए उन्होंने. तो कहते हैं गलत बोल रहे हैं आप, 80 नहीं 76% थे. बड़ा कमाल किया, कर्ज पे कर्ज लेते चले गए. और इससे मैंने कहा था कमजोर हूं शेर और शायरी में, लेकिन गालिब का एक शेर पढ़ के सुना देता हूं आपको. कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारा फाका मस्ती एक दिन. वो रंग लाई, इनकी हुकूमत गई और इंशाअल्लाह ताला कभी नहीं आएगी अब, चाहे वो कुछ भी करें. और इनकी हालत ये है, हुकूमत जाने के बाद कभी कोई साजिश बताते, कभी कोई साजिश बताते, और अल्लाह न करे मेरे मुंह में खाक, कहते हैं कि पाकिस्तान खत्म हो जाएगा इनके लीडर. मैं उनसे कहना चाहता हूं, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने 10 अक्टूबर 1947 को कहा था लाहौर में एक जलसे में, और मैं कोट करता हूं, देयर इज नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अंडू पाकिस्तान. इनकी साजिशें नाकाम होगी, पाकिस्तान
का कयामत कायम होगा, इनके बगैर कायम होगा इंशाअल्लाह ताला। मुझे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो याद आते हैं जब हिंदुस्तान ने एटमी बम के धमाके किए थे, और अब वही हालत है, इन्होंने इकोनॉमिक माइंड बिछा दी हमारे लिए। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था, वी विल ईट ग्रास, even go hungry, but we'll get one of our own। इंशाअल्लाह ताला हम इकोनॉमी को वापस राह रास्त पे रहेंगे। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था, we have no other choice, they may have a choice। सोच लिया कि पाकिस्तान खत्म होगा या पाकिस्तानी अफवाज को कुछ होगा, हमारे लिए इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का है कयामत कायम रहेगा। और जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान का बचाव करती रहेगी। तो इनकी ये 3.5 साल की हुकूमत आई, इन लोगों ने जो कुछ सिंध के साथ मैंने बताया करना था किया। 2 महीने पहले एक जमहूरी तरीके से पहली बार पाकिस्तान में थ्रू अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इनकी हुकूमत गई। और मैंने 2 महीने पहले तो बात थी, मैं बता दूं एक और शेर मुझे निकला दे, साहिल लुधियानवी का है, कुछ और बढ़ गए अंधेरे तो क्या हुआ, मायूस तो नहीं है तुलुए शहर से, हम इंशाल्लाह तुलुए शहर है। और अब से आगे ना सिर्फ ये अगला साल, अगले 5 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क की तकदीर बदलेगी। मैं अब मैडम स्पीकर रिलीफ के मेजर्स बताएं। मैं अगले साल की बजट पे आता हूं। मैं इससे पहले कि मैं अगले साल की बजट पे जाऊं, एक और मेजर इशू जो हमें इस वक्त फेस कर रहा है उसके बारे में मैं कुछ बोलना चाहूंगा। जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा। जो सिंध का दर्द रखते हैं वो सुनेंगे, और जिनकी चीखें मैंने निकाली है वो चीखते रहेंगे ऐसे। दिस ईयर वी हैव सीन सीवियर वाटर शॉर्टेजेस ऑल ओवर पाकिस्तान, whereas Sindh is facing drought-like condition. Share of Sindh has been fixed at 6.483 million acre feet during early Kharif against water code allocation of 8.292 million acre feet. Untimely supply of water is another major issue. Cotton sowing season in Sindh starts early April. As compared to other provinces of Pakistan, we are early cotton sowers. Yet we faced 8% more shortages in comparison to the other province. As of May, Sindh has faced 55% water shortage, which has adversely affected our agriculture sector. Madam Speaker, we have taken up the matter of unequal distribution of water with the federal government. Politicization of this issue has worsened the situation in the entire country. I had personally taken up the matter with the Prime Minister of Pakistan and conveyed that inter-river system authority is involved in unjust water distribution. Government of Sindh is rigorously advocating its case for regular and timely release of water as per Water Accord 1991, and it shall continue to do so. Madam Speaker, with your permission, let me now place before the August House fiscal performance of the government during the current financial year 2021-22. Against an estimated budget of 1,335 billion, the revised receipts of the provincial current financial year stand at 1,273 billion. We have received rupees 781.45 billion against budgeted receipts of 869 billion. In the 11 months of the current financial year, receipts of federal PSDB for the financial year 2021-22 stand at rupees 5.4 billion against the revised target of rupees 6.3 billion, whereas revised foreign budget assistance stands at rupees 46 billion. The provincial tax and non-tax receipts are revised at rupees 283 billion
against an estimated target of rupees 329 billion. On the current revenue expenditure side, the revised estimates stand at rupees 1.037 trillion against budgeted of 1.089 trillion. Total size of the development budget during 2021-22 was rupees 329 billion, which includes provincial ADP of 222 billion, district ADP of 30 billion, federal PSDP of 5.3 billion. Provincial ADP of rupees 222 billion is revised at rupees 179 billion. By end of current financial year 2021-22, 740 schemes of various departments will successfully be completed. Out of 1,669 new schemes in ADP 2021-22, 1,450 schemes have been approved, which will continue as ongoing schemes in next year. By the end of current financial year, we will be able to spend 85% of the development budget, that is 15% higher than last financial year. It reflects on a growing capacity and a rational financial management. Madam Speaker, now I present to you the salient features of budget 2022-23. The total receipts of province for financial year 2022-23 are estimated at rupees 1.68 trillion, against budget estimate of 1.45 trillion for current financial year, showing overall increase of 15.7%. Receipt from federal government on account of revenue assignment, straight transfers and grants are estimated at rupees 1.0551 trillion for next financial year, which continues to constitute 62.8% of total receipts of the province. It is an increase of 41.4% of a budget estimate of rupees 89.8 billion. The receipts of federal PSDP are estimated at rupees 6.025 billion for next year, received on account of foreign project assistance, budgetary support loans and grants are estimated at rupees 144.543 billion. Receipts from provincial owned resources on account of tax and non-tax received are estimated at rupees 374.5 billion. Madam Speaker, the total outlay for financial year 2022-23 is estimated at rupees 1.7414 trillion. The current expenditure of the province is projected at rupees 1.254 trillion, which includes current revenue expenditure of rupees 1.199 trillion and current capital expenditure of 54.5 billion. This is 73.2% of total expenditure of the province. Madam Speaker, for the next financial year, the size of the development budget will be rupees 459.658 billion. This is in comparison of rupees 329.033 billion in the year 2021-22. This will include rupees 332 billion for provincial ADP, rupees 30 billion for district ADP, foreign project assistance of rupees 91.5 billion and rupees 6 billion are expected from federal PSDP grant for schemes being executed by the federal government. Madam Speaker, we've had a tough last 3.5 years with the previous government, which took every step to ensure that the people of Sindh suffered. We were subjected to target hitting when it was distribution of development portfolio of the federal government. I have just given you details कि किस तरीके से हमारे साथ नाइंसाफी की गई थी. मैडम स्पीकर, अगले साल में 2,506 ऑनगोइंग स्कीम्स हैं और उनकी एलोकेशन 253 बिलियन रुपीज है, जो कि तकरीबन 75% है एडीपी का. 1,652 नई स्कीम विद एन एलोकेशन ऑफ 79 बिलियन बीइंग 25% ऑफ टोटल एडीपी आई है. ऑनगोइंग स्कीम्स 70% से एक्सपेंडिचर इस बेट जहां हो चुका है, उसको हम अगले साल फुली फंड करेंगे.
अगले साल के लिए हमने 1510 स्कीम को फुली फंड किया है और इंशाल्लाह ताला हमारी एक्सपेक्टेशन होगी कि जून 2023 तक हम 1510 नई स्कीमें, जो कि एक रिकॉर्ड होगा, हम अगले साल करनी चाहिए। एलोकेशन ऑफ एजुकेशन सेक्टर, हमने एजुकेशन में 34.2 मिलियन रखा है। इस साल का रिवाइज एस्टिमेट 15.11 मिलियन था। ये 127% इंक्रीज है एजुकेशन की डेवलपमेंट बजट में। हेल्थ सेक्टर में हमने 23.33 अरब रुपए रखा है। इस साल 11.9 मिलियन का रिवाइज एस्टिमेट था और ये 96% इंक्रीज है हेल्थ बजट में। वाटर और सैनिटेशन सेक्टर में हमने 188% इंक्रीज किया और अगले साल का बजट 59.36 मिलियन है। इरिगेशन और एग्रीकल्चर लाइवस्टॉक सेक्टर में हमने 26% इंक्रीज किया है और अगले साल का ईडीपी 42.7 अरब रुपए है। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट और वो रोड सेक्टर, कम्युनिकेशन सेक्टर में हमने 75% इंक्रीज किया है और इस साल ये 100.64 बिलियन होगा एज कंपेयर टू 57.383 बिलियन इन द आउटगोइंग करंट फाइनेंशियल ईयर। कराची बेस स्कीम्स के लिए जैसे मैंने बताया 118 अरब रुपए रखे गए हैं। हम अगले साल 3653 नई नौकरियां, नई पोस्ट हमने एसएमई में रखी हैं। मैं हेल्थ के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जेपीएमसी को हमने 594 मिलियन दिए फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर पेशेंट फाइनेंशियल ईयर 2022-23। 3.5 अरब रुपए ईपीआई वैक्सीन के लिए रखे हैं। एनआईसीडीपीडी के लिए हमने 12.539 बिलियन रखे हैं। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज के लिए 1.1 बिलियन रखा है। 125 बिलियन हमने गामा नाइफ रेडियो सर्जरी सेंटर टाउन यूनिवर्सिटी के लिए रखा है। 200 मिलियन हमने ग्रांट दिए किडनी सेंटर कराची को। पीपीएचआई के लिए 11.5 मिलियन रुपीस। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉमा के लिए 2.4 मिलियन रुपीस। मैं एक इनिशिएटिव जो सिंध हुकूमत का है उसके बारे में बताना चाहता हूं। पीर अब्दुल कादिर शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इसके लिए अगले साल हमने 6 मिलियन रखा है और हम अगले साल गंबट को फर्स्ट मेडिकल सिटी ऑफ सिंध का दर्जा दे रहे हैं। गंबट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पूरी दुनिया में मशहूर है कि टाल का हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जिस तरीके से टर्शरी केयर सर्विसेज दे रहा है और इसी को मद्देनजर रखते हुए हम पीर अब्दुल कादिर शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो गंबट में है, इस गंबट शहर को फर्स्ट मेडिकल सिटी ऑफ सिंध का स्टेटस दे रहे हैं। इसके अलावा 290 मिलियन हमने रखे हैं फ्री ट्रीटमेंट ऑफ थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए। 155 मिलियन हमने रखे हैं 11 डायलिसिस सेंटर्स के लिए। जैसे मैंने पहले बताया था, चाइल्ड लाइफ के लिए 1.6 अरब रुपए रखे हुए हैं। मैं इसके बाद आपको थोड़ा सा हेल्थ के बारे में जो मैंने अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट में दिया हुआ है, मैं एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। Education continues to be one of the key priority areas of the government of Sindh. We aim at improving access to equitable
inclusive and quality education for all. Education sector is being given a total allocation of rupees 327 billion next financial year. The non-development budget has been enhanced for rupees 268.4 billion during current financial year 2021-22 to rupees 292 billion for the next financial year. 34.2 billion have been earmarked for development budget, as I said earlier. दुआ साहिबा, आपको मैं फोन कर रही हूँ कि आप मोबाइल रख दें। दुआ साहिबा, मोबाइल हमें नहीं मिलना, यहाँ अकेले ही करें सब मोबाइल रख दें। यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड्स के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड्स की एलोकेशन 13.314 बिलियन कर दी गई है, जो इस साल से 14% इंक्रीज के साथ 18.7 बिलियन हो जाएगी। यूनिवर्सिटीज की ग्रांट जो इस साल 9.4 बिलियन थी, उसको बढ़ा के 14.3 बिलियन किया गया है। एक और इनिशिएटिव जो हम यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड्स के बारे में एक इनिशिएटिव हम ले रहे हैं। हम सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट में या यूनिवर्सिटी या एक यूनिवर्सिटी कैंपस का कयाम करेंगे और इस सिलसिले में इस अगले साल में कुरंगी, कराची वेस्ट, क्यामाड़ी, मलीर, टंडो मोहम्मद खान, टंडोला यार, सिजावल में या यूनिवर्सिटी का कैंपस बनाएंगे। मैं थोड़ा सा आपको जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का हमारा इनिशिएटिव है, मुझे आपको ये बताने में खुशी हो रही है कि हम पहले ही एशिया में हमारा प्रोग्राम 6th बेस्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम था। इस साल हमने हमारा प्रोजेक्ट था नबीचर से बजियार वाटर वर्क, हमने 2 ग्लोबल अवार्ड्स इस ट्रांजैक्शन के लिए हासिल किए हैं। ये प्रोजेक्ट हमने कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की सब्सिडियरी एनोटेक के साथ मिलकर किया है और 2 अवार्ड इस ट्रांजैक्शन ने लिए हैं और पाकिस्तान के किसी प्रोजेक्ट ने कभी ये अवार्ड नहीं लिए। ये सिर्फ सूबे की कारकर्दगी थी कि हमें ये अवार्ड मिले हैं। हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर बलीर एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट, M9 and 5 लिंक रोड प्रोजेक्ट, घोटकी कनकोट ब्रिज, अर्बन रोड इनिशिएटिव कराची, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट TP1, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट TP4, इंडस्ट्रियल वाटर फ्रॉम नबीसर टू बजियार, कराची हब वाटर कनाल प्रोजेक्ट, desalination plants, मार्बल सिटी प्रोजेक्ट, धाबीजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, खैरपुर स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसके अलावा एक हमारा प्रोजेक्ट है, हम LED टेक्नोलॉजी पार्क बना रहे हैं और हम चाहते हैं कि IT के अंदर जो स्कोप है अपने एक्सपोर्ट बढ़ाने का, उसके लिए हम प्रॉपर फैसिलिटेशन करें और इस सिलसिले में हम एक टैक्स इंसेंटिव भी देना प्रपोज कर रहे हैं। इस वक्त IT सर्विसेज के लिए 13% होता है सेल्स टैक्स ऑन सर्विस विद इनपुट एडजस्टमेंट। हम 2 ऑप्शन दे रहे हैं, 13% सेल्स टैक्स ऑन सर्विस विद इनपुट एडजस्टमेंट या एक रिड्यूस्ड रेट 3% का और न्यू स्टार्टअप्स हम देंगे ताकि हम IT सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें। मैं हमारे और अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूँ। अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो हमारे रानी बाग हैदराबाद का प्रोजेक्ट हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर देते हैं। LDA स्कीम 42 एजुकेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ हेल्थ प्रोजेक्ट है हमारे, और इसके अलावा हमारी जो बाकी कंप्लीटेड स्कीम्स है मैं अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट में यहाँ पेश कर रहा हूँ।
मैं ट्रांसपोर्ट सेक्शन में इस साल हमने पीपल्स बस सर्विस शुरू की है एनआरटीसी के साथ, और इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों में ये बस सर्विस कराची के लोगों के लिए शुरू हो जाएगी। बहुत आप लोगों का गैर जिम्मेदाराना रवैया है। मैं आप लोगों को वार्न करती हूँ कि अपना रवैया दुरुस्त करें। कराची सस्टेनेबल बीआरटी रेड लाइन इंशाल्लाह ताला उसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है, और कराची के शहरियों के लिए ये भी देगी। कराची लेबर ऑफ इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स में कई चल रहे, कराची अर्बन मोबिलिटी प्रोजेक्ट, कराची वाटर एंड सीवरेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक के साथ ये भी चल रहे हैं। कंपेटिटिव एंड लिवेबल सिटी ऑफ कराची प्रोजेक्ट क्लिक के नाम से वर्ल्ड बैंक के साथ चल रहे हैं। सॉलिड वेस्ट इमरजेंसी एंड एफिशिएंसी प्रोजेक्ट स्वीप चल रहा है। कराची वाटर सीवरेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट फेज 2 का शुरू हो गया है। बहुत गैर जिम्मेदाराना रवैया आप लोग दिखा रहे हैं। मैं वार्न करती हूँ आप लोगों को कि आप तशरीफ रखिए अपनी अपनी जगहों पे। मैं सोशल वेलफेयर में जो हमारे प्रोजेक्ट है बताना चाहता हूँ। सोशल वेलफेयर के अंदर हम मार्जिनलाइज सोसाइटी, सेक्शन सोसाइटी, उनके लिए स्कीम्स दे रहे हैं। उसके लिए 3 अरब रुपए की एलोकेशन है। हमारे यहाँ सिंध रूरल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए 500 मिलियन की इंडाउमेंट फंड हम उसको दे रहे हैं। पीपल्स पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम, उसके लिए हम अगले साल पैसे रख रहे हैं। माइनॉरिटीज के लिए हम अगले साल 65% इंक्रीज के साथ 888 मिलियन से बढ़ा के 1.468 बिलियन रख रहे हैं, जिसमें 1 अरब रुपए की स्पेशल ग्रांट पे माइनॉरिटीज वो रखी गई है। विमेन डेवलपमेंट पे हमारा खास फोकस है, और हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 644.125 मिलियन हमने इसके लिए मुख्तस किए हैं। सोशल प्रोटेक्शन का डिपार्टमेंट हमने बनाया है, और अगले साल हमने 15.435 अरब रुपए रखे हैं, जिसके अंदर 15 बिलियन रखे हमने सिंध पीपल सपोर्ट प्रोग्राम के लिए। 2 बिलियन हमने रखे पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम फॉर स्मॉल बिजनेसेस। 3 बिलियन रखे हमने पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम फॉर स्मॉल फार्मर्स, लोन्स इन रूरल एरियाज। 500 मिलियन रखे फॉर रिवैम्पिंग ऑफ ओल्ड एज होम एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। 500 मिलियन रखे रिवैम्पिंग ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑर्फनेज। हमारे जो एम्पावरमेंट ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पर्संस का डिपार्टमेंट है, इसके लिए हमने बजट डबल से ज्यादा कर दिया है, और उस पे हम अगले साल, कुछ दिनों पहले मैंने अडल्ट ऑटिज्म सेंटर का कोरंगी में इफ्तिताह किया था। अगले साल हम सारे डिविजनल हेडक्वार्टर्स में ऑटिज्म सेंटर्स बनाएंगे। वाटर और इरिगेशन में हमें, मैं पहले बता चुका हूं, जो हम वाटर शॉर्टेजेस फेस कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला हम इस साल, अगले साल के लिए हमने 24 अरब रुपए रखे हैं, और एग्रीकल्चर और इरिगेशन डिपार्टमेंट की कंबाइंड एलोकेशन जो है वो 36.2 बिलियन है। मैं बाकी चीजें मेरे हमारे बजट की इस पॉलिसी स्टेटमेंट में है। एक और हमारा इनिशिएटिव है स्पोर्ट्स एंड यूथ डिपार्टमेंट का। हम सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट में एक यूथ सेंटर प्रपोज कर रहे हैं, और ये यूथ डेवलपमेंट सेंटर जो है अगले साल 19 नए यूथ डेवलपमेंट सेंटर बनेंगे 19 डिस्ट्रिक्ट में। बाकी डिस्ट्रिक्ट में ये मौजूद है, और उनको हम बेहतर करेंगे। मैं इसके साथ अपनी बजट स्पीच के इख्तिताम पे पहुंचता हूं। मैं जिन लोगों की चीखें आज फिर निकाली, जो पिछले 4 साल से
वही नारे कर रहे हैं, मुझे पता ये नहीं सीखे। इनको जमहूरी तरीके से जब निकाल दिया गया तो इनकी चीखें और निकली है। ये गैर जमहूरी लोग इसी तरीके से गैर जमहूरी हरकतें करते रहेंगे। अगर तुम्हें पाकिस्तान के अवाम मुस्तरद कर चुकी है और सिंध के अवाम तुम्हें इंशाल्लाह हमेशा मुस्तरद करेंगे। मैं एक बार फिर अपनी लीडरशिप, मेरे ट्रेजरी साइड के दोस्त, मेरे ऑपोजिशन में दोस्त जो तामुल से मेरी तकरीर सुन रहे हैं, उनका शुक्रगुजार हूं। इंशाल्लाह ताला हम इस बजट पे डिस्कशंस करेंगे। इसमें अगर बेहतरी की गुंजाइश होगी तो उसमें बेहतरी भी लाएंगे और रब की मदद से इंशाल्लाह ताला न सिर्फ हम ये बजट पास कराएंगे, अगले साल बजट देके वो पे पास कराएंगे और 2023 की इलेक्शन के बाद हम पूरे पाकिस्तान में हुकूमत कायम करके इनकी छुट्टी हर जगह से करेंगे। मैं शुक्रगुजार हूं फाइनेंस डिपार्टमेंट का, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को, सारे डिपार्टमेंट्स का, जिन्होंने निहायती मेहनत से ये बजट बनाया है। अगले कुछ दिन इस बजट पे अगर इन लोगों ने चीखों के अलावा डिस्कशन करना चाहिए तो हम डिस्कशन वेलकम करेंगे और हम चाहेंगे कि प्रॉपर्ली डिस्कस हो। और ये जिस चीज के चाहे झूठे सही वोट लेके आए, चाहे जाली तरीके से सही असेंबलियों में आए, वो जो कुछ वोट लिए वो हक अदा करें। और ये जो नारे लगाते हैं ना, ये नारे अगर लगाते रहेंगे तो अगले दफे ये इस असेंबली के बाहर नारे लगाते रहेंगे और वो भी लोग, इनके साथ कोई नहीं होगा। मैं मैडम स्पीकर आपका शुक्रगुजार हूँ, मैं असेंबली के स्टाफ का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया है कि हम ये बजट पेश करें। इंशाल्लाह ताला इस बजट पे डिस्कशन होगा। मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि कोई फाइनेंस बिल नहीं है, तो इसलिए हम फाइनेंस बिल पेश नहीं करेंगे, इसलिए कि हमने ना सिर्फ कोई नया टैक्स नहीं लगाया, बट हमने एग्जीक्यूटिव पावर्स यूज करते हुए टैक्सेस अबॉलिश किए हैं और कम किए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।